आज हम पढ़ेंगे डू और डज के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है और क्वेश्चन में आपको डू और डज यूज़ करना है तो आप किस तरह यूज़ करेंगे? सो आप इस तरह के सेंटेंस बोलते होंगे। क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं? क्या आप किताब पढ़ाते हैं? क्या आप स्पेनिश बोलते हैं? क्या वे किताब लिखते हैं? क्या हम दिल्ली जाते हैं? क्या वे खिलौने देते हैं? क्या वे खाना बनाते हैं? क्या ये काम करता है? क्या ये रोज़ाना बारिश होती है? क्या यहाँ रोज़ाना बारिश होती है? कुछ और सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम पढ़ते हो? क्या वहाँ ठहरता है? क्या हम लोग हंसते हैं? क्या हरी गाड़ी चलाता है? क्या दुकानदार चावल बेचता है? क्या तुम धूमपान स्मोक करते हो? क्या तुम रोज दौड़ते हो? क्या यह लड़का अंग्रेजी समझता है? क्या चिड़िया आकाश में उड़ती है? क्या तुम रोज फल खाते हो? क्या तुम्हारा भाई हर महीने घर आता है? क्या तुम हर सप्ताह पत्र लिखते हो? सो आपने नोटिस किया होगा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, और आपको जवाब चाहिए हाँ और ना। तो आपने जिससे भी सवाल पूछा है वो आपको जवाब देगा हाँ और ना। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला और स्ट्रक्चर याद करना होगा। यू कैन यूज डू और डज। अगर आप डू यूज करेंगे, डू के बाद आपको प्लूरल सब्जेक्ट यूज करना होगा, यू भी दे आई, फिर उसके बाद वर्ब एक्शन। यू कैन यूज डू यू, डू बी, डू दे, डू आई प्लस एक्शन। अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है तो आपको यूज करना होगा डज। डज ही, डज शी, डज इट प्लस एक्शन। सो लेट अस प्रैक्टिस सम एग्जांपल। डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू यू रीड बुक? सो यू हैव टू यूज डू, देन सब्जेक्ट, then verb, then object. Do, subject, verb, object. Do you read book? क्या आप किताब पढ़ते हैं? Do you speak Spanish? क्या आप स्पेनिश बोलते हैं? Do they write books? क्या वे किताब लिखते हैं? Do we visit Delhi? क्या हम दिल्ली रहते हैं? Does he give the toys? क्या वो खिलौने देता है? So if you are using singular subject, अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं लाइक ही, शी, इट, तो आपको डज यूज़ करना होगा। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं यू, वी, दे, आई, तो आपको डू यूज़ करना होगा। डज शी कुक फूड? क्या वो खाना बनाती है? डज इट वर्क? क्या ये काम करता है? डज इट रेन डेली? क्या बारिश रोज़ाना होती है? तो सिंपल फॉर्मूला है, इफ़ यू आर यूजिंग डू यू, do we, do they, do I plus action, or you can use does he, does she, does it plus action. Now we have the list of action. Okay, so you can practice like this: do you plus action. Do you swim? Do you abuse others? Do you fight with neighbors? Do you fly kite? Do you hide the truth? Do you know Mr. Sharma? Do you keep wallet in pocket? Do you lend money? Do you speak confidently? Do you write to your friend? Do you advise others? Do you obey elders? Do you oppose others? Now we'll answer like this: I swim, I abuse others, I fight with neighbors, I fly kite, I hide the truth, I know Mr. Sharma, I keep wallet in pocket, I lend money. I speak confidently, I write to my friend, I advise others, I obey others, I oppose others. Now using singular subject, we can use does he, does she, or does it. So does he swim? Does he abuse others? Does he fight with neighbors? Does he fly kite? Does he hide the truth? Does he know Mr. Sharma? Does he keep wallet in pocket? Does he lend money? Does he speak confidently? Does he write to your friend? Does he advise others? Does he obey elders? Does he oppose others?
Now we will use affirmative sentence. He swims, he abuses others, he fights with neighbor, he flies kite, he hides the truth, he knows Mr. Sharma, he keeps wallet in pocket, he lends money, he speaks confidently, he writes to his friend, he advises others, he obeys elders, he opposes others. Now we'll use negative sentence. He does not swim, he does not abuse others, he does not fight with neighbors, he does not fly kite, he does not hide the truth, he does not know Mr. Sharma, he does not keep wallet in pocket, he does not lend money, he does not speak confidently, he does not write to his friend, he does not advise others, he does not obey others, he does not oppose others, he does not speak confidently, he does not write to your friend, he does not oppose others. So it's very simple to practice. So you can practice like this. Does she plus action. In action आप put कर सकती हैं verb like eat, sleep, drink, come, go, pull, push. Does she, does it, do we, do you, do they, do we. So it does, you, she, does it, do we, do you, do they, do we. I hope you got it.